Yes, I will repeat it after few minutes in our session. So is it visible? ये दिखाई दे रहा है presentation? Yes, sir. Okay, thank you. So our today's topic is archives, archaeology, tourism, culture, and museum. Why we should need to connect these all, and what the correlation of these all, we'll see it today. So first, just we want to say about few words for archaeologists who studied about these all archaeological sites and archaeological artifacts, the science behind it, and we can say the development phases also, trying to decode this all. Then archivist is a person who works the same above work with the documents. So both are important terms. Now we'll see uh, culture. So archaeologists and archivists both are trying to preserving the culture. We can say the evidences or the significant, important things related with the culture. So difference is in the medium and process. So archaeologists excavate objects and send them to repositories or museums. Okay. So archivists commonly known to organize and preserve documents, but that can vary from institution to institution. So how these are correlate, we'll see. Could we say this as archives? No. Why? It's just we can say dumping of the books. But for this, yes, we can say archive. And here in the museum, uh, the information we get from the archive, but the material from archaeological sites, archaeological artifacts. It's not necessary if it's a archaeology museum, then it's okay. But the historical artifacts too. Hmm? So the museums is like the combination of these all, and we organize the tours, educational tours. Then, but please remember again, such type of the institution means not only the museum. एक ऐसा दिखने वाला कोई वास्तु, उसको ही सिर्फ संग्रहालय कहा जा सकता है, यह दिमाग से अब निकाल दीजिए. बिकॉज as per changing this terminologies like the open air museum or some virtual museum like that. So इसको हमें भूल जाना है, क्योंकि भूल जाना है माने इसको याद रखते हुए नेक्स्ट जो है उसको भी ध्यान रखना है. भूल जाना है माने पूरी तरह से नहीं. इट्स नॉट नीड टू फॉरगेट. सो नीड ऑफ आर्काइव्स, काउंट वर्क्स आवर्स ओनली. सिर्फ कितने घंटे कौन से देश में कितने लोग काम करते हैं, हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी आवर्स वर्क्स इन एनी कंट्री. इज इट ओनली फॉर दैट? What the use of then archives? Like here it's mentioned one thing. India has the most populated cities on earth, Delhi. So हम लोगों ने कभी पोल्यूशन के रिलेटेड कोई म्यूजियम बनाया है क्या? Is there any such museum which seriously define this drawbacks, or we can say the results or the effects of the pollution? उसके बारे में हमें बार बार क्यों intentionally we needed to design a museum? Is it only for the pollution? We can see all these things, and from where we get it, like the websites of Statista. So excellent archives of this Statista. So you can see here, India, how many people died every year? 2.33 million, means 23 lakh around. So number of death attributes to air pollution between 2007 to 2010 to 2017, 12.41 lakh. So अभी इसके लिए थोड़ा सीरियसली सोचेंगे. Now here, in the COVID-19, because of one coronavirus, major cities around the world see improvements in air quality. So just to see here, Delhi, what is the difference? So as we can see, these all cities, the entire humanity, and
द ह्यूमन पॉपुलेशन, समग्र मानव जाति मिलकर के जो काम नहीं कर सकी, वी so called civilized and well educated peoples of this entire world, we can't do this work. हम लोगों ने ये बदलाव हम नहीं कर पाए. बस only the dialogues, discussions, seminars, workshops, so many things, but we can't do this. But because of just a single virus, corona, it's happened. Result is here. I don't want to argue anything where क्या कहाँ गलती हो गई, किसकी गलती हो गई, what the problems, because of whom and that all, which institutions, which organizations, nothing like that. But just to see the results. सिर्फ ये रिजल्ट हमारे सामने है कि हम लोग मिलकर के जो नहीं कर पाए, कोरोना वायरस ने वो करके दिखाया. COVID-19 improves air quality in just 3 months. See here, this quality. And now again, अभी ये सिखाया, but what we learn from this? Nothing. Because now again the same situation, hazardous situation in Delhi, in Pune, or the cities, कई सारे cities है. Now waterless countries. This is one example for the air pollution. Okay. Now about the water. Just 10 countries account for 60% of the world population without access to clean water. And see the India's number, because now India is the first highest population, no? So in this country around 20% peoples not get the clean water. Even we the people, at the time of traveling anywhere, on the airport or on the railway station, in railway journey, we purchase the bottles, okay, drinking water bottles. But are all the distilleries? क्या सभी distillery होते? No. But till then we purchase it. So there is no any such parameters for to check it, or why couldn't we get clean water then? Jal Mosam Vigyan Prabhag, our this department always mentioned so many things about the rainfall. Then what is the situation of our rivers? Rivers polluted. Then 30% sites have polluted water. So we called as our cities established, our towns established on the banks of the rivers. But what we will say in future? हम भविष्य में क्या कहेंगे? Are our these cities or towns established on the gutter Ganga, on the drainage water? Because all the rivers polluted. Could you say any single name of any river? Completely वो start से लेकर end तक clean है, not polluted. मैं मनुष्य के अंदर यानी हम लोग जहाँ निवास करते हैं उसके अंदर के रिवर की बात कर रहा हूँ. Where the peoples or the cities are situated, towns situated on the banks of the river. Could you say any single river name? कि वहाँ का पानी बिल्कुल polluted नहीं है. The water is not polluted there completely. It's we can use for drink. Could you say a single name? But I can say few names of the rivers, those who are far away from this human touch. मनुष्य बस्तियां जहां पर भी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स जहां पर भी है, उससे दूर जो ऐसी नदियां हैं, if we can't say that the rivers, we can say the small water flow, जो भी छोटे झरने हैं, तालाब है, मनुष्य से दूर है, मनुष्य की पहुंच से दूर है, but they are clean. Then where is the problem? हमारे अंदर प्रॉब्लम है. हम लोग जो है बातें तो बहुत करते हैं, हम लोग सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, ऐसे शब्द प्रयोग खुद को करते हैं, बट टिल ये खराब कौन कर रहा है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ. इंक्लूड्स टू ऑल, not a single person, a single caste, a single religion, single country, not anything like that. But results is there. समग्र मनुष्य प्रजाति की हम बात करते हैं. So हम मिलकर के, we all, हम सब मिलकर के अपनी एक रिवर को क्लीन नहीं कर पा रहे. एक रिवर को, see this
गंगा मिशन कितने सालों से चल रहा है, कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यमुना के लिए देखिए, millions and billions of rupees spent, but till then what is the result? But see the result at the time of corona covid, बोले कि गंगा में कितना शुद्धि हो रहा है या यमुना में क्या हो रहा है, डॉल्फिन दिख रहे, ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि समग्र मानव प्रजाति से एक कोरोना वायरस ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। हाँ, क्या ऐसे ही बार बार आते रहना चाहिए? देन extent ऑफ कंटेमिनेशन इन द वाटर, कितने लेवल तक कितना ये बढ़ गया है। आप चाहे जितना वाटर प्यूरिफायर्स यूज कीजिएगा, बट टिल देन are we really confirm to say that it's an really clean or um, uh, it's a 100% you can give the guarantee it's proper कि ये पानी पीने लायक है? could you say that it then ground water जो यूज किया जा रहा है, इट्स पैटर्न ऑफ different major cities, states. What's happened nowadays? Now, just we will see one example. Srikakulam district. Water consumption, groundwater का ज्यादा क्यों हो रहा है? It's not because of this increasing of population only, but because of changing the technologies. So technologies, what's happened? पहले पानी जब चाहिए होता था तो हम लोग कुएं से पानी निकालते थे. It's a man-made efforts. So, but afterwards, so like labor work. But afterwards, just press one button, single button, and you could get the as much as water as you wish. इतना जितना ज्यादा आप पानी चाहे उतना ज्यादा आप उसको निकाल लेते थे. So ये टेक्नोलॉजी जब यूज होने लगा, so no one cares about it. जब लोग हाथों से खींच करके मेहनत करके पानी निकाल लेते थे, so उस समय में बहुत ही जितना चाहिए उतना ही पानी हम खींच लेते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, हम लोग जिस तरह से पानी को यूज कर रहे हैं, सी वी कांट से द वर्ड यूज, बट अननेसेसरी एक्सेस जो हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज द वेस्टेज. तो some scholars or some our students asked क्या फर्क पड़ता है, फिर पानी तो जाकर के फिर जमीन में ही हो जाएगा ना, ultimately then percolate again and then we will get the same water like that. But is it too easy? Is it in one day process? Not like that. So hundreds of years required for such type of the water. कई सौ साल लग जाते हैं जब ये पानी पूरा ऐसा हो करके हमारे पास जब आ जाता है. So like from 1972 to 2012 only, number of districts out of 17 drought affected districts which faced more than 50% rainfall. Like just I want to give an example. Latur district, which is in Maharashtra, on the border of the Karnataka and Telangana and Maharashtra, we can say like that, border of Karnataka and Maharashtra. So Latur district, water supplied by train, and first time declared the news that we are ready to supply the water the using of the train. Is it sufficient? एक ट्रेन पानी भर के लेके आके पब्लिक को सप्लाई करना, इज इट सफिशिएंट? नो, इट्स ओनली फॉर फ्यू ऑफ देम. कुछ ही एरिया को वो सप्लाई हो पाता था. 100 ट्रेन अगर भेजेंगे एक दिन में, 100 ट्रेन अगर भेजेंगे, तब जाकर के एक शहर का पानी का, बिकॉज population is if it's like the 5 lakh 10 lakh, how you can provide by train? How many trains you required for it? Is it so easy? तो पानी फिर कहाँ से लाएंगे? जहां से ला रहे वो लोग चुप बैठेंगे क्या? So many such problems faced. Then third one question about the global hunger index. Just see in 1992 and in 2007 what happened. Then at the beginning of 2020, 135 million people faced acute food insecurity, and by the end of 2020, this number increased to 265 million. So it's a CSIS record. Just I want to say that. So what
द सिचुएशन इन योर सिटी, आपके शहर में क्या हाल है, क्या आप इसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कुड यू आस्क एनी इंस्टीट्यूशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस? इफ नॉट, देन व्हाई कांट? क्यों नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? बिकॉज वी आर नोइंग सच इंस्टीट्यूशंस देयर, दोज हु आर स्टडी फॉर इट। हमारे शहर में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि शहर में कितने लोग भूखे मर रहे हैं डेली, उसका कोई आंकड़ा दे। बारिश कितनी हुई, कितनी होगी, ये गूगल में सर्च करके बता सकते हैं। वी कैन सर्च जस्ट टुडेज टेम्परेचर और रेनफॉल in so and so city, but there is no any such website which could provide us the information regarding this hunger city wise or town wise। ये तो एक बड़े पैमाने पर इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, ये भी कुछ साल के अंतराल के बाद ऐसा होता है। बट प्रॉपर प्रॉपर रिकॉर्ड आपके शहर का, यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति अगर बता, एनीवन अमॉन्ग यू, could you say in my city such and such number of peoples not get the food every day? कोई बता सकता है? इज इट पॉसिबल? नॉट। द तो अगर लोग भूखे मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी टू केयर अबाउट दिस थिंग, वन डे when the same situation will happen with you, then what will happen? एक दिन जब आपके ऊपर भी इस तरह का नौबत आएगी भूखे मरने की, सी द थिंग इज नॉट एज ओनली इंडिविजुअल, विथ द मासेस टू। कई बार ऐसा होता है कि किसी शहर में ऐसी नौबत आ जाती है, सच प्रॉब्लम नीड्स टू फेस एनी पर्टिकुलर रीजन, लोकेलिटी, सिटी, लाइक दैट। ड्रॉट्स प्रॉब्लम्स लाइक इन द सिटीज, नाउ इट्स हैपेंड बड़े बड़े शहरों में, शिकागो या बैंगलोर। सी आवर developed one city in India, it's face some area of the Bangalore city, more than around half city face this problem very seriously, like I mentioned about the Latur city. So if we are not ready to care about it seriously, ये हो रहा है क्या हमारे शहर में भी ऐसा हो सकता है? Just to see the level of groundwater, just to see, just 20 years back, before using this borewells and that all this thing, 20 or we can say 30 years back, groundwater level up to 50 to 100 feet. But now what is the situation? It's more than 1000 to 2000 feet. कुछ जगह उससे भी ज्यादा नीचे चला गया है। So what is the result of this all? This air pollution, water pollution, hunger, it will be become the cause for such type of the we can say viral diseases. It's not just, see here, total confirm this for entire world we can say, so 83,59,869, so 8.3 million. So every year this much people died because of pollution. हर साल इतने लोग पोल्यूशन से मरते हैं। और ये कोविड का इतना इतना ये किया गया, इतना बताया गया, सी कितना प्रॉब्लम हो गया वगैरह वगैरह, बट पोल्यूशन से उतने लोग हर साल मर रहे हैं। बट क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जस्ट सी another example. I don't want to say the name, but in this situation, very sorry to say this, Gadkari ji mentioned in last one his interview that India was there on 8th number in this automobile industry, but now we are on the 3rd position. Increasing of this automobile industries or the vehicles, increasing of the number of vehicles, is it good or bad? Which type of vehicles, किस तरह के vehicles आप यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इट्स डिपेंड। तब जाकर के आप गर्व से कह सकेंगे, देन यू कैन से प्राउडली हमारे पास इस तरह का माने पोल्यूशन जिससे नहीं होगा ऐसे व्हीकल्स है। बट उसके बारे में उतना सीरियस है क्या?
इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का या ऑटोमोबाइल फील्ड में हम लोग इतना इस लेवल पे पहुंच गए, एक है ना। बट उसके apart from that, or rather than this, if we could say that पोल्यूशन फ्री, पोल्यूटेड ये जो है उससे उससे फ्री, ऐसा हमारे इतने सिटीज है। नाउ वी हैव 100 cities इन इंडिया, नो एनी पोल्यूशन देयर। कौन सा ज्यादा आपको ठीक लगता है? विच वन इज द बेटर? जस्ट यू कैन डिफाइन इट। देन सी दिस रिजल्ट्स when in 2000, sorry, in 1919, huh? So in remembrance of the children buried in this area who died in flu epidemic of 1918, names are known only to God. इनके नाम भी पता नहीं है। सो ऐसे कितने तो भी ये होते। सो सच टाइप ऑफ द इंसिडेंट्स हैपन, बट 1918, in 1918, used a mask. Here you can see this photograph from the National Archives. So such type of nurses preparing masks to prevent the spread of this influence. But till in 2018 or 2019-20, our some of the political leaders, they mentioned that, or they gave the statement that no need of to use this. Your stamina, or you are living in which area, or in which house, or in which vehicle you are traveled, it's your own. But what about the common man? उसके लिए तो आपको संसर्गजन्य रोगों को रोकने के लिए इसका यूज करना चाहिए ना। Then why should such type of the false statements? हम लोगों को उसके बारे में, we should need to take care about this too. See these all photographs. Then why COVID-19 is nothing like the deadly Spanish flu? Because now we have such type of the media or channels, awareness for to create the awareness, and we have the machineries. हम लोग उसको यूज करके जल्द से जल्द उनको सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। we could provide the services to all the public, but at the same time, what about the immunity power? उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? सो स्पेनिश फ्लू के समय में इतना अवेयरनेस नहीं था, कॉजेस को और ये करने के लिए नहीं था, बट उनका सी द डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल, difference between the lifestyle 100 years back. Why 100 years? Just to see the example, 30 or 40 years back, we all the peoples, we all the यहाँ जितने भी participants, we played in the ground. Daily spend 1 hour at least in ground. We discussed with the friends and the family and all. But what is the situation now? Are we ready to play in the ground? Just to see and ask your child, how many hours daily he spend in the ground? If not in the ground, at least play with the friends in the building or nearby your houses, or like that in your colony, or just in your beside flats, near your neighbors. Like my child Atharva, who daily plays with Sanu, one girl child there. So and entire in all the children in our building, Matoshi apartment building, they, anyone can come in my house and he play with the Atharva, and he also goes to all the flats and he play with his friends. So are we really ready to see such type of the atmosphere everywhere? Then please play with the children. You also needed to play with them. मोबाइल को बाजू में रख दीजिए, कीप योर मोबाइल असाइड एंड प्ले विथ देम. एटलीस्ट स्पेंड half an hour 1 hour with your child when you are at home. जब भी आप घर में रहेंगे, I know that. See, to me also, I'm in Pune, Atharva is in Jalgaon, but whenever we meet, we always play with each other. We went to the gardens and we just traveled in the surrounding region. जहां भी जाना है जाइए, उनके साथ खेलिए. बॉन्डिंग जो है ना आपका, वो उससे बनता है. एंड सेम बॉन्डिंग विथ योर नेबरर्स, सोसाइटी. सो ये बॉन्डिंग बनता है, तब जाकर हेल्दी लाइफस्टाइल बनता है, तब जाकर के
आपका, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, इस पर भी बहुत कुछ बातें निर्भर करती है. योर फूड स्टाइल आल्सो. So such type of things we should need to take care. See such type of the diseases, Black Death. What happened? Hmm? In Europe, around 50% people died at that time. Millions of people died. So here, hmm, 20 crore people died at that time. So the most recent this flu pandemic, uh, ये स्वाइन फ्लू आया, कितने लोग मरे उसकी वजह से? 5,75,400. It means that such type of viral diseases occur again and again. वो बार बार हो रहे हैं. इसके पीछे का कारण हंड्रेड्स और यू कैन सी 1,000 ईयर बैक, 1,000 साल का, अगर 1,000 साल का अगर वायरल डिसीजेस का हिस्ट्री अगर आप स्टडी करेंगे, इफ यू आर रेडी टू स्टडी अबाउट दिस ऑल, यू विल गेट द आंसर्स. आई हैड प्रेजेंटेड वन रिसर्च पेपर and from LA University and few universities from Washington DC. The students sent me email for asking the research paper for to study it. See this, 53.9 million from all causes worldwide. हाँ? ये इन्फेक्शन के बारे में क्या ये हो रहा है, उसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड दिस रिपोर्ट. देन this battle related deaths, the number is less than the pollution, than the viral diseases and that all these things. So युद्ध की वजह से इतने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग जो है पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं. बट till then what about the battles too? From the last thousands of years, we studied about these battles, like from the Ptolemy or the Alexander and that all, Maurya. But till then, is it stopped? क्या वॉर खत्म हो गए? हम लोगों ने उससे क्या सबक सीखा? टिल डे टू डे कहीं ना कहीं वॉर चली रहे हैं. इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दी, वी कैन से बिकॉज ऑफ दी मनी, पैसों की वजह से, और रिलीजियंस, किसी धर्म का दूसरे धर्म से. सी इन दिस एग्जांपल इन सीरिया, जस्ट वन एग्जांपल. It's a Islamic country, but till then there are the such type of the problems are there. See the fight between the two states like Maharashtra and Andhra because of this water, Godavari water. ऐसे झगड़े, फिर उसके लड़ाई, then converted into the wars. Why we can't give this type of the examples in our museums and need to present the solutions? हम लोग इस तरह का अध्ययन करके संग्रहालय में इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या? एंड देन come together for to implement such type of the solutions with the dialogue between this administration and with on the national and international level, with a we can say a network power, museums network or a scholars network like that. So see, ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं. इट्स इन पॉम्पे सिटी, उस समय एक्सकैवेशन में ये सब प्राप्त हो गया था. दिस थिंग्स हैपेंड and deaths. Archaeology find out many such incidents, but what we learn from this all, museums can convert this as our study part by visualizing it for visitors and new generations with the help of archivists and archaeologists. Just a single one thing I want to mention. How many of us, हमारे बीच में से कितने लोग, और in common public or society, we visit to any archaeology department in our life? कितने हमारे बीच में से ऐसे लोग हैं, और common society, just to do one survey and ask the peoples how many of them visited any archaeology department. Maybe you will get 0.1% like that. Just ask to them how many of them are among us visited any archives for to study. Again,
The answer will be 0.1. But maybe, as per my own small study, more percentage you will get the people those who are visit the museums, at least 1%. हाँ, so 1% लोग तो ऐसे होंगे जो किसी ना किसी संग्रहालय को, टूरिस्ट साइट्स. So please again remember tourist sites as our new definition, open air museums. So उसको visit करते हैं. So then why can't we visualize these things? Air, pure air, pure water, food security, and then about this viral diseases. इसके बारे में अगर हम लोग लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए अगर आप प्रॉपरली ये करना चाहते हैं, सी आवर इंडियन फूड हैबिट इज लाइक ऑलरेडी प्रॉपर मेडिसिन. हमारी भारतीय आहार पद्धति अपने आप में एक जो है वो औषधि ही है. सो बिकॉज अन्न औषधि समझकर ही हम खाते हैं ना. सो प्रिपेयर्ड फूड, फ्रेश फूड, मदर हो चाहे पत्नी हो चाहे जो भी बनाते हैं, हम लोग फ्रेश फूड खाते हैं. हम लोग डेली पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, एनी मैदा रिलेटेड जो भी फूड्स है वो हम ज्यादा प्रैक्टिसेस नहीं करते ना. वी ईट इट लाइक द समटाइम्स चेंज, लाइक once in a month like that, but not daily. So we eat every day fresh foods, roti, chapati और राइस, सांबर, रसम, पप्पू, जो भी आपका प्रैक्टिसेस है डेली वो खाते हैं. सो according to our environment, our food practices are there different in all these different regions. भारत के विभिन्न प्रांतों में जहां भी जाएंगे इन डिफरेंट स्टेट्स, different food cultures we can see. It's depending on the that environment and your work practices. But what happened nowadays, पंजाब में जाते तो चाइनीज फूड खाते हैं, और दिल्ली में जाते हैं तो सॉरी इन महाराष्ट्र we ask Punjabi food like that. It's not bad to ask. It's okay for the change once in month or once in week like that, but not daily. हर रोज वही खाए, these practices are not good. हम लोग इतिहास उसका भी पढ़े ना, उसके. So according to that, then all the problems, उसके पीछे मेडिकल प्रैक्टिसेस में, मेडिकल इंडस्ट्री और दिस हेल्थ इंडस्ट्री, they will not say about these things again and again. But we, the so-called historians or the archaeologists or the archivists or the museologists, why can't we do such practices? हम लोग इस तरह का कुछ बना करके अगर हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारा जो भी म्यूजियम्स, क्राउडेड जो भी प्लेसेस है वहां पर अगर इसके बारे में लगाएंगे तो द फूड प्रैक्टिसेस ऑफ बनारस, द फूड प्रैक्टिसेस ऑफ लखनऊ, द फूड प्रैक्टिसेस ऑफ दिल्ली, द फूड प्रैक्टिसेस ऑफ पुणे, आप उसके बारे में अभी पूछो किसी को भी, व्हाट इज फेमस ऑफ पुणे, क्या है पुणे का फेमस खाने का, तो हम लोग कंपनी का नाम बोल के बोलते. वो चितड़े का बाकरवड़ी, इन नागपुर वैसे ऑरेंज बर्फी, हल्दीराम, और वन मोर ब्रांड इज देयर. सो बट why can't we say like संतरा of Nagpur, orange of Nagpur, then the grapes of Nasik. So, इस तरह का हमारा अपना क्या फूड प्रैक्टिसेस जो चलते आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? इंदौर में जाते हैं तो बोलते हैं वहां का जो पोहा और जलेबी जो मिलता है, इंदौरी पोहा और जलेबी, सो इट्स फेमस देयर. और छोले भटूरे ऑफ पंजाब. साउथ में हमारा इतना टेस्टी टेस्टी फूड्स है कि उसका नाम भी लेना बड़ा ये है. सो मेनी थिंग्स, अप्पम, दिस डोसा, उत्तपम, इडली, वड़ा, सांबर, रसम. रसम इटसेल्फ इज अ मेडिसिन, जितना वैरायटीज और जितना बेस्ट बनाते हैं. सो दिस प्रैक्टिसेस अगर उसको प्रॉपर रखना है, यू टेक द हेल्प ऑफ आर्काइविस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट फॉर द डिजाइंस, फॉर टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एंड देन हम लोग फिर ये डेथ मीन्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, डेथ मीन्स नॉट ओनली द एंड ऑफ लाइफ, बट डेली लाइफ जो हम स्पॉइल कर रहे हैं, डेली लाइफ जो हमारा स्पॉइल हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर दिस लाइफस्टाइल.
उसको हमको कैसे चेंज करना है. सी व्हाट इज द कल्चर. Culture means values, beliefs, behavior, practices, and these material objects that constitute a people's way of life. It's a bridge to the past as well as guide to the future. संस्कृति ये है. कल्चर इज दिस. हमारी जो मूल्य है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारा प्रैक्टिसेस है, हाँ, बिहेवियर प्रैक्टिसेस, बिहेव हाउ चाइल्ड बिहेव विथ हिज मदर एंड फादर, हाउ मदर behave with the children or father behave with the children, like that, how students behave with the gurus and the gurus behave with the students. ये सभी जो है ये हमारा बिहेवियर प्रैक्टिसेस है. धर्म इसी को कहते हैं. धर्मा इज दिस थिंग कि हम एक माँ अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या बच्चे अपने माता पिता के साथ किस तरह से रहना चाहिए, बच्चों को गुरुजनों के साथ और गुरुजनों को बच्चों, ये धर्म है हमारा. बट इसको हम कुछ दुनिया में ले जा करके हम इसको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, मॉरल मॉरल और सम अनदर वर्ड्स, मॉरल एजुकेशन लाइक दैट. वो अपने आप में नीत है भाई. इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सो कॉल्ड स्कूल और कॉलेज एजुकेशन लाइक दैट. ये हमारा डे टू डे लाइफ एजुकेशन है जो हमारे अपने माता पिता, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, उनसे मिल रहा है. बट बच्चे कहाँ से ये सीखेंगे? दिस कल्चर, how we can inculcate these values, this culture, in our next new generations with only of our behavior. हमारा जो बिहेव है, our behave with our mother and father, हम अपने माता पिता के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं. अगर कोई बेटी, अगर कोई बहू घर में आकर के अगर उसके पति को ये कहती है, पत्नी अपने पिता को अगर एक अपने अपने पति को अगर ये कहती है, इफ एनी such a new married couple, if a wife say to her husband, now we need to live separate, हम लोगों को अब अलग रहना चाहिए कुछ दिनों के बाद, we need to give the comfort or we need to give the space for your mother and father, ऐसा बोल करके, see the intention, ऐसा बोल करके सेपरेट रहें. then और हमें ड्यूटी जाने के लिए, हमें ये करने के लिए, वो करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, ऐसा बोल करके सेपरेट रहने लगे. देन स्लोली निग्लेक्ट टू मदर एंड फादर. क्या जरूरत है, वो देख लेंगे अपना. ये करना है, हमें ये चाहिए. आई नीड गोल्ड, आई नीड लैंड, आई नीड न्यू हाउस, आई नीड न्यू फ्लैट, लाइक दैट. बट डोंट केयर अबाउट योर मदर. तुमने अपनी माँ को एक साल में कितना पैसे दिया? इज एनी वाइफ आस्क्ड टू हिज हर हस्बैंड? पूछते हैं. Sorry to say, same vice versa. Any husband asked to her wife, his wife, sorry, about her mother and father. तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? उनके लिए कोई जरूरत है क्या? और कुछ देना है, प्लीज गिव विथ लव. प्यार से अगर आप कुछ देंगे तो वो ना नहीं कहेंगे. जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, सिचुएशन. आप क्या कर सकते हैं? हम बिना बोले, विदाउट अटरिंग द वर्ड्स, विदाउट आस्किंग, इफ यू जस्ट बिहेव, प्यार से अगर आप उनके साथ रहते हैं, उनका जो जरूरत है उसको समझते हुए अगर आप उसको पूरा करते हैं. वेरी सॉरी, माई इंग्लिश नॉट इज सो वेल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. विथ लव, इफ वी फुलफिल द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ योर वाइफ, एंड इफ अ वाइफ फॉर her husband, then the questions will solve slowly. धीरे धीरे ये समस्याएं दूर होंगी एंड कल्चर का सही में मतलब क्या में आएगा. बट इज इट पॉसिबल? ये इट्स डिपेंड ऑन ऑल ऑफ अस. कोई पत्नी अगर अपने पति को अगर ये पूछे कि आपने अपनी माँ के लिए इस हफ्ते में क्या किया, इस महीने में क्या किया, इस साल भर में पिछले क्या किया, अगर ऐसा पूछे तो बहुत बड़ा ये होगा. कोई पति इसी तरह से अपनी पत्नी को भी पूछे कि मैं क्या कर सकता हूं बताओ. नॉट आस्क टू योर वाइफ कि तुमने क्या किया, ऐसा मत पूछ. मैं क्या कर सकता हूं वो कृपया मुझे बताओ. या बिना पूछे अगर दिखता है, समझता है तो अगर करोगे तो मुझे लगता है परिवार जुड़ जाएंगे. नाउअडेज फैमिली ब्रेक्स. परिवार टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं. स्टूडेंट्स आर द सॉरी, childs are not ready to care
for their mother and father. Why? Because same situation with the mother and father. माता पिता पैसे ज्यादा कमाने के लिए किसके लिए कमा रहे हैं पता है? बच्चों के लिए कमा रहे, बोल रहे हैं, इट्स ओके, बट एट दैट टाइम इफ दे आर नॉट रेडी टू लिव विद देम हैप्पीली, इतना बॉन्डिंग आपका पक्का होना चाहिए कि बच्चा माँ दिखते गले मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है क्या? घर से बाहर जा रहे पैर छूना चाहिए। एनी कल्चर, एनी रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, भूल जाइए सब कुछ। कल्चर वही है, रिलीजन वही है, धर्म वही है कि जो ये सिखाता है कि बच्चों का माता पिता के साथ कैसा ये होना चाहिए। वंस यू ब्रेक दैट बॉन्ड्स, यू विल गेट दैट रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर। अगर एक बार आप ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, भविष्य में इसके फल हमें भी मिलेंगे। बिकॉज द सीड्स विच यू आर बोइंग, आप जो बीज बोएंगे फल उसी के पाएंगे ना। कोई करेला का बीज बोया और आम पाए, ऐसा तो नहीं होगा। सो वी शुड नीड टू सी दिस थिंग्स। ये कल्चर को हमारे टूरिस्ट स्पॉट जो है, लाइक जस्ट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, पंढरपुर और एनी 12 ज्योतिर्लिंगम, केदारनाथ और एनी, और दी वाराणसी और तिरुपति बालाजी। क्या है तिरुपति बालाजी का एग्जैक्ट कल्चर? ये क्यों बना, ये प्लेस क्यों बना, इसकी पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव वाइब्स क्या है? वो ईश्वर का, उसका स्पिरिचुअल और वो मिलता है, वो आपका बिलीफ से वो मिलेगा ही, उसके लिए कोई नहीं। बट यहाँ की ऐसी क्या अच्छाई है जिसको हम स्प्रेड करें? व्हाट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर देयर इन दिस लोकेलिटी, द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेस विच वी नीड टू स्प्रेड एवरीवेयर? क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं हमारे यहाँ का जो बेस्ट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मे बी इट्स बाय द लोकल आर्टिस्ट और एनीथिंग, जो भी है अच्छा जो भी है उसको प्रमोट करने के लिए, अच्छाई को प्रमोट करने के लिए क्या हम कुछ एग्जीबिशन डिजाइन करके ऐसे जगह पर लगा सकते हैं? Are we ready to create some such type of the exhibitions of such best practices, the potential of your place, and could we exhibit it in such places, the crowded people, the places, or at least at the time of the yatras, the fairs and festivals? ऐसे समय में भी तो लगा सकते हैं, like the Ekadashi, Ashadi and Kartike Ekadashi in Pandharpur, and Mahashivratri at the places of this Jyotirlinga. So could we design something like this? But again, just I want to say, it's no need to exhibit only the part history. सिर्फ इतिहास में ये था, ऐसे ऐसे था, पहले ये मंदिर ऐसा था, अब ये मंदिर ऐसा हो गया, इस राजा ने ये बनाया, this king established this city and like that. No, we want the best practices, the potential, कुछ अच्छा जो समाज में अच्छाई को आगे बढ़ाए. You can show your this architecture also, but what's intention behind it? उसके पीछे क्या होना चाहिए? Now we will see that all these things. See these following points: art, thoughts, artifact things, cultural practices. What is the culture? This is the mind map. Then just to see here the language. The language means not only Hindi, Marathi, English, Urdu or anything like that. लैंग्वेज मीन्स आप लोगों के साथ किस तरह से बात करते, किस तरह से हम्बल, विथ लव, बोलते हैं ना कि बड़े अदब की जुबान है उर्दू। सो संस्कृत जो है दिव्या गिरवाण भारती, ऐसा बोलते हैं ना। बट क्या आपके बिहेव से, आपके टोन जो आप यूज कर रहे उससे वो प्रतीत होता है? इफ इट इज, देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर कल्चर. मेडिकल क्योर, Ayush, Ayurveda, Yoga, Siddha, Unani, Herbal, so many such things, practices are there, homeopathic, but the intention behind that, Ajivaitsa Batua, we use this term in Marathi. So very simply, our grandmother, grandfathers gave us these practices. Medical cure means not only to prepare medicine every day. As I mentioned, our food culture, food habit is itself a medical cure. Then the religion. Again, please remember, I love
Hinduism, but as well as I love all the religions and respect for all the religions. For the see, if you are ready to respect others, then अगर आप दूसरों का सम्मान करने के लिए तैयार हो तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे ना. अदरवाइज जैसे कहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं पैसे बटोर करके या डरा धमका करके मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं, इट विल नॉट हैपन. Spend millions and billions of rupees, but afterwards your families breaks. See the example of European countries. Then if you want to spread your religion with the using of sword and the guns, no, your child or your next new generations will cut your heads only. वाली आपकी नस्लें आपकी ही गलों को, आपके गर्दन को काट देगी. हाँ, धर्म धर्म के एक धर्म के अंदर जो अनेक पंथ है, हाँ, वो सब एक दूसरे का गला काटते जाएंगे. सेम थिंग हैपेंड एवरीवेयर. सो रिलीजियंस मीन्स नॉट दिस थिंग्स. धर्म ये नहीं है. धर्म जो कहा कि धर्म में जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं यूज करता हूँ कि समग्र जगत जो है हमारा परिवार है, इससे चलेंगे. गलत है तो गलत है, चाहे जो भी कोई भी हो. जो अच्छा है तो अच्छा ही है, चाहे जो भी हो. सो इस मूल्यों को अगर याद रखते हैं तो वो रिलीजन हमेशा के लिए अच्छा है. चाहे वो बुद्ध हो या महावीर हो, चाहे कबीर हो, नानक हो. पोती पढ़ी पढ़ी जग हुआ, हुआ न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. ये सीख हमको देकर के चला गया कबीरा. बट आर वी रियली नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द रियल लव. जिसको देखा भी नहीं उसके साथ भी मीरा ने प्यार किया. बट हम लोग प्रेम की वो परिभाषा भूल गए. और हम लोग अभी जो माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में पालन करती है, अपनी आंख खोलने से पहले हमको इस तरह से इतना प्रेम से ये करते हुए, इतना तकलीफ को सहते हुए है ना, हमें जन्म देती है. और हो सकता है कभी कभी जन्म देते हुए माँ का डेथ हो जाता है. बट टिल देन इफ डॉक्टर आस्क्ड अ मदर क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, योर लाइफ और द बेबी, ऑलवेज मदर्स आंसर बेबी. व्हाई? एक माँ ये कहती है कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, जो बच्चा जन्म ले रहा है वो चाहिए, मेरा डेथ हो गया तो भी चलेगा. दिस इज द लव एंड दिस इज द रिलीजन. ये धर्म है. अगर प्रेम की परिभाषा न सिखाए, अगर नफरत की परिभाषा सिखाने वाला चाहे कोई भी धर्म हो, वो धर्म नहीं है. वो मेरा तो धर्म नहीं है, चाहे किसी और का हो सकता है. चाइल्ड रेयरिंग मेथड्स, ये क्या है भाई? इसके बारे में कभी सोचिए. कभी हम फिर बात करेंगे. फूड, फोक आर्ट, सेलिब्रेशन, जोक्स, मैनर्स. हंसते रहिए, हंसाते रहिएगा. क्लोज ड्रेसिंग, वर्किंग शेड्यूल्स. कभी कभी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है कि हिजाब पहने नहीं पहने, हाफ कपड़े पहने नहीं पहने. हु आर यू टू डिसाइड फॉर द अदर्स? बाद में बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती है इसलिए उनके ऊपर बलात्कार होते हैं. भाई अपने अंदर की हैवानियत को खत्म करो. दूसरों को ये कहने से बहुत ये है, हम अपने अंदर को देखें. कि वो गालिब का शेर बोलते हैं ना कि सारी जिंदगी जो है वो आईने की धूल साफ करता रहा. चेहरे धूल जो है वो तो चेहरे पर जमा थी ना. सो सेम लाइक दैट. सो ये सभी चीजों को हमको ध्यान देना है. वर्किंग शेड्यूल्स, जितना संभव है समय है सबके साथ रहते हुए प्यार से हंसते खेलते फिर अपना काम भी करते रहिए, ताकि वो काम जो है काम नहीं बल्कि आपका एक क्या बोलते हैं उसको डेडिकेशन बन जाए, और आगे आने वाली जनरेशन भी आपको देख करके सीख जाए. सो कल्चर, ये सभी और चीजें हैं उसमें जोड़ने के लिए. सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर. एनवायरनमेंट, प्रकृति के बारे में. द ओनली ट्रूथ इज दैट द लव between the human and the love between the human and the nature, this is the only truth. और जो कल्चर इसके खिलाफ सिखाता है, प्रकृति के खिलाफ जाकर के सिखाता है, वो कल्चर नहीं है. टाइम, एक्शन, कम्युनिकेशन, स्पेस, पावर, कई सारी बातें अंतर्मुख होकर के सोचना है. हम लोग इंटर पर्सनालिटी है, इंट्रो, और अंदर भी झांकना है. और इसको बोलते हैं हम लोग जे पिंडित ब्रह्मांडी. हम अपने अंदर झांक के देखे फिर विश्व के बारे में ये करें. जो गलतियां मेरे अंदर है उसको मैं सुधार के मैं अच्छा बनने का प्रयास करूं, और विश्व में जो जो अच्छा है उसको मैं सीखने का प्रयास करता रहूं. सो
So many such things are there in the culture. See this art, drama, and music. How many such beautiful things we have? Just here only. What is art? The expression, application. ये हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छाई बुराई जो भी है उसको एक्सप्रेस करते हैं. बट सीखना क्या है? सी हियर ऑस्कर वाइल्ड एंड सो मेनी सच. हियर द मेंशन नो ग्रेट आर्टिस्ट he sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist. ये बहुत सारी ऐसी बातें जो अलग अलग हमें बताए. अरिस्टोटल, the aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance. बट जो मैं बाहर देखता हूँ, मैं सोचता भी हूँ, तो उसको भी ये करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज. ये सब नीचे जो दिख रहा है ना सिंबल्स ऐसे. सो ये पिक्चर्स है जो प्रस्तुत कर रहा है किस चीजों को. नाउ यू सी वी कॉल्ड दिस नाउ अडेज एज डिजिटल आर्ट. ओके. सो अपने अंदर जो भी नीत है उसको एक्सप्रेस कर रहा है व्यक्ति. बट क्यों कर रहा है? अपने अंदर की उस अच्छाई बुराई, वाट एवर द गुड और बैड इनसाइड द मी. जस्ट लाइक जब हम लोग झगड़ा करते हैं परिवार में, फिर भी एक बच्चा एकदम गुस्से में आकर के कुछ बोल देता है, तो क्या हो जाता है? परिवार वाले समझ लेते हैं ना, चलो भाई ठीक है. हाँ, कोई हमारा बहुत जिसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल दे, तो हम तुरंत उसके कान के नीचे बजाते हैं क्या? नो. व्हाई वी कांट टेक एन एक्शन? बिकॉज वी नो इट्स हिज एक्सप्रेशंस at this moment, but we know that he's a good person. Same like that, such type of the expressions are there everywhere through the art forms, different art forms, like in the dance also. शिवा का तांडव नृत्य अगर चल रहा है, श्रृंगार वीर करुणाता से बयान का वो चल रहा है, तो श्रृंगार भी है उसमें, करुण रस भी है उसमें, विभत्स भी है उसमें, रौद्र भी है उसमें. So such type of the feelings are there in the art. But art is what? About more than pretty pictures. The visual arts will teach your kid to think outside the box, to be a problem solver. How can we use this art for the welfare of all, for the problem solvings? Like बहुत बार होता है ना, वो पोस्टर्स बैनर्स बनाते हैं, और वो एक पोस्टर और बैनर, एक पिक्चर बहुत कुछ बता देता है. मोर देन द 100 वर्ड्स अ पिक्चर इज सेइंग मोर अबाउट इट. उससे ज्यादा बताता है. सो ऐसे कैसे? सो हियर इट्स मेंशन्ड आर्ट इज लाइफ, आर्ट इज योर वॉइस, आर्ट इज अ थेरेपी. हाउ कैन वी यूज दिस आर्ट इज अ थेरेपी? जस्ट विल सी वन एग्जांपल हियर. यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, नाउ आई एम हियर, बट दिस आर्ट इज मोर ब्यूटीफुल, दिस स्कल्पचर इज मोर ब्यूटीफुल देन एक प्रकृति की देन है, और एक वो प्रकृति के देन के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा निर्मित ये मूर्ति है. See, if I will spend my time, or if I spend or we can say concentrate for to create some such type of the art. ये इस तरह का कोई मूर्ति, कोई पिक्चर, कोई पेंटिंग अगर मैं बनाने का प्रयास करूंगा पूरा दिल लगा करके, what will happen? एक सुंदरता निर्माण होगी ना. So just want to say, see, these are all beautiful. So art is what? The beauty of your heart. कला क्या है? अपने आत्मा की सुंदरता है. प्रयास कीजिएगा सुंदर निर्माण करने का. कितने दिनों तक हम बच्चों को मंदिरों में ले जाते हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस, नेचुरल साइट्स, म्यूजियम्स विजिट के लिए ले जाते हैं. बट कैन वी कीप अ पेंसिल एंड पेपर इन आवर पॉकेट? जस्ट टेक इट और ट्राई टू मेक सच टाइप ऑफ द पिक्चर्स. कुछ मूर्ति, कुछ ऐसा कुछ निकालने का, आपके सामने बहुत सुंदर समुद्र किनारा दिख रहा है, सनसेट हो रहा है या सनराइज हो, जो भी है, बट क्या हम उसको पिक्चराइज करने का प्रयास करेंगे? इफ यू स्टार्ट, योर चाइल्ड विल आल्सो स्टार्ट. एक्चुअली चाइल्ड स्टार्ट बिफोर ऑफ अस. वो शुरू करता है जब वो छोटा रहता है ना, पेंसिल लेकर के, ही टेक हिज पेंसिल और पेन और एनीथिंग व्हाट एवर ही गेट and try to create the or picturize on the walls, but we stopped.
हम लोग उसको रोक देते हैं। वो बोलते ए क्या कर रहे खराब मत करो, प्लीज नॉट ट्राई टू मेक लाइक दिस, नो एनी स्क्रैचेस ऑन दी वॉल्स, ये किराए का घर है, ओनर हमको गुस्सा करेंगे। बट आपका बच्चा जो बन रहा है, जो उसका जो लाइफ का ये हो रहा है ना, अच्छाई को जब रोकोगे ना, when you stop such his creation, please remember that it will convert into again in arrogancy or whatever there, उसका गुस्सा क्रोध उसमें वो चेंजेस होते हुए वन डे डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। ये क्रिएटर के बजाय डिस्ट्रॉयर आप लोग निर्माण करेंगे। सो प्रमोट द आर्ट, उसको प्रमोट कीजिएगा। जिस जो लगता है ना सुंदर है, चाहे वो गीत हो, म्यूजिक हो, जो भी है, 64 टाइप ऑफ आर्ट, बट उसमें से एक दो थोड़ा कम कर दीजिएगा, बट कम माने वो सिखाइएगा, बट उसका इंटेंशन जो है उसको बदल दीजिएगा। लाइक द चौर्या ऑल्सो कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ आर्ट, उसको भी एक बोला है। बट हैकर के बजाय कंप्यूटर एक्सपर्ट बनो, बट हैकर के बजाय हैकिंग को रोकने के लिए उस नॉलेज को यूज करो। सो इस तरह से आपको जो है यानी हमेशा एक योद्धा जो होता है, योद्धा वीर जो होता है, पराक्रमी जो होता है, वॉरियर, नॉट वी कैन से वॉरियर, ब्रेव पर्सन, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट, सभी की रक्षा के लिए वो खड़ा होता है, नॉट किल। कमांडो, एक कमांडो बनना है और एक किलर बनना है, उसको याद रखना है। सो एक आर्ट में जब आप चलेंगे ना, तो वो क्रिएशन की ओर बढ़ेगा, सुंदरता की ओर जब एक बार डेडिकेटेड हो जाएंगे ना, तो बुराई की तरफ अपने आप में पीठ हो जाएगी। यू विल नॉट गेट टाइम फॉर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग और टू थिंक बैड फॉर द अदर्स। दूसरों के बारे में बुरा सोचने के लिए भी वक्त नहीं है भाई, क्योंकि अच्छाई निर्माण करने के लिए कितना अच्छा अच्छा हमारे पास में है। सो मेनी सच ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग्स सराउंडिंग ऑफ अस, बट आर वी रेडी टू स्पेंड आवर लाइफ, डेडिकेट आवर लाइफ फॉर टू create something beautiful? Then you will not get the time for to think any bad things for the others. उतना समय ही नहीं मिलेगा, बस करते रहना है। अच्छा जो भी है ना, करते रहना है। और नेक्स्ट जनरेशन सिखाने की जरूरत नहीं है, यू हैव नो नीड टू टीच एनीथिंग, वो आपकी तरफ देख के सीखेंगे। बच्चा बचपन से ही वो करते चलता है, मगर उसको वो अप्लीकेबल कहाँ करना है वो पता नहीं चलता है। When he saw or she any child saw his and her mother and father what they are doing daily, what's grandfathers or the parents or the elders in our society, brothers and sisters, what they are doing, it's a replicate, वो 10 गुना ज्यादा उसका रिप्लिकेट करता है। सो अच्छा करो तो उसका 10 गुना अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा करो तो 10 गुना। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, आप किस तरह से बोल रहे अपने माता पिता, अपने आसपास के बच्चे, उनके प्रति आप निगेटिविटी अगर आपके माइंड में भी है ना, वो बच्चा 10 गुना ज्यादा निगेटिविटी आपको उसका रिजल्ट देगा, और ये पक्का याद रखना है। और अगर अच्छा करते हैं, आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स है दूसरों के प्रति, सी यू हैव नो नीड टू फीडिंग टू ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को आप खिला सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं, बट किसी एक व्यक्ति का बुरा भी सोचिए मत। अगर इतना करेंगे ना, तभी बहुत है। किसी के बारे में बुरा सोचिए मत, आपका बच्चा वही देख के सीखता है कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्या ये हो रहा है, दिन रात तो मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे। when he see these all these things, he definitely replicate, वो उसको जो है वो फॉलो करता है और वो उसी से सीखता है। देन व्हाट इज आर्किटेक्चर, इज द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी आर्ट। समाज की मन की सुंदरता जो होती है ना, ऐसे एक विशाल सुंदर एक वास्तु होती है। एक व्यक्ति की मन की सुंदरता मैं एक मूर्त बना सकता हूँ, बट एक अकेला व्यक्ति इतना सुंदर भव्य ऐसा कोई ये नहीं बना सकता है। if the society, if the community is disturbed, if there is no any such peace, is it possible to create such a beautiful architecture over there? It's not possible, no? So as we mentioned, the golden era, like that, स्वर्ण युग ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं, वो कब हो सकता है? अगर समाज शांत है, समाज सपोर्टिव है, सोसाइटी सपोर्टिव है,
the leadership supports for such beautiful things, for the creations, then it's possible. Otherwise it's not possible. रात दिन गोलियां चल रही है, अंधाधुंध हो रहे. Just go to on the border of the Kashmir and ask any of the child what you want, India or Pakistan. Just answer is that we want the peace. क्या चाहिए, भारत या पाकिस्तान? उत्तर जवाब मिलेगा, वो ये कहेगा बस शांति सुकून चाहिए. जो रोज उठ करके ये देखता है इधर से या उधर से कहीं से गोलियां चल रही है, माँ बाप हर एक बच्चों के मर रहे हैं, तो पहले तो ये चाहेगा ना कि शांति चाहिए भाई, अमन चाहिए. उसको ये पता नहीं है कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, क्योंकि वो उतना छोटा है, बहुत छोटा है. जस्ट 5 और 10 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं ना, उनसे पूछिएगा. बट उनके दिमाग में जब जड़ें भर दी जाती है ना, जहर भर दिया जाता है कि कौन सही कौन गलत कौन सही, ये जब उनके उसके दिमाग में भर दिया जाता है, तब जाकर के फिर वो बाद में वो भाषा बोलने लगता है कि नहीं नहीं ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है, फिर इसके बारे में ऐसे उसके बारे में. जस्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज द गॉड? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू हंग्री पर्सन. भगवान क्या है? किसी भूखे व्यक्ति को पूछिएगा, द ब्रेड इज गॉड. एक भूखे व्यक्ति के लिए जो है रोटी उसका भगवान है. ये तब तक समझ में नहीं आता है जब आपको खुद को ऐसे भूख से तड़प के मरना पड़ता है. एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी जो है वो उसकी जान है, जल ही जीवन है. ऐसा वाटर इज लाइफ, व्हाई इट्स मेंशन्ड. ऐसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिख के रखा है. क्यों लिखा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून. ये लिखा हुआ है. क्यों लिखा है? इसी का कारण है ना कि हम इसके बारे में इतना डीप में जाकर के सोचना है. बस इतना ही, बहुत ज्यादा बहुत कुछ पढ़ लिख करके दुनिया बदल दोगे, फॉरगेट इट. बिन पढ़े लिखे व्यक्ति भी दूसरों के जीवन में तकलीफ देने वाले नहीं बनते. सी आवर नोमैडिक्स ट्राइब्स, उनका जीवन जाकर के देखिए. जो डॉरी, ये वो, सो मेनी सच प्रॉब्लम्स वी आर टॉकिंग नाउअडेज. इट्स नथिंग देयर in that nomadic tribes. When I was lived there in Andaman Nicobar, I experienced all these things. So वो प्रकृति से बहुत नाता रखे हुए बहुत सुंदर लोग हैं. Then heritage cycle. Try to understand what is the heritage. Heritage means not only सिर्फ हमारी जाति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का. Heritage is for all. धरोहर जो होती है ना, सबके लिए होती है. और जो अच्छा होता है ना, वो अच्छा ही होता है. अगर जैसे हाथ तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है किसी मूर्ति का, तो तोड़ दिया है, क्रिएशन का भी आप पावर रखिएगा. सालों तक, सिर्फ सदियों तक अगर ये बताते रहे कि ये मूर्तियां ऐसे आक्रांताओं ने विध्वंस किया हुआ था, जैनों ने हिंदुओं का, हिंदुओं ने जैनों का, हिंदुओं ने मुस्लिमों का, मुस्लिमों ने हिंदुओं का, क्रिश्चियनों ने यहाँ आकर के ये किया वो किया. हम आने वाली जनरेशन को क्रिएशन की भी ताकत दे. 1000 साल हो गए इस देश में, नालंदा जला दिया बोलते बोलते, बट एक फिर से नालंदा नवनिर्माण क्यों नहीं करा, पुनरुत्थान, रिसर्जेंस क्यों नहीं कर पाए? उसी तरह का IITs, IIMs, इसकी बात हम करते हैं, बट क्या वो उसी का समाज के बदलाव की ताकत रखते हैं? इज देयर एनी सिंगल इंस्टीट्यूशन, एनी यूनिवर्सिटी which can say that yes, we are here the problem solvers? Just I say one example. I visited the Kamakhya temple in Guwahati. I was there in IIT. I lived there in IIT's campus. But when I was traveled from the Kamakhya temple to IIT campus, just on that corner, so many such factories are there. Dhua everywhere, the pollution. And then I asked one of best guide or my friend, Dr. Sunil ji there, who is heading one department. So such you can say the cream of the knowledge here. ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में, इतना सारा, इतने एक्सपर्ट्स है, बट टिल देन हम लोग इसका सोल्यूशन क्यों नहीं दे सके? Why can't we give the solution for this pollution? So पोल्यूशन के लिए सोल्यूशन नहीं दे सकते और हम कह रहे हैं कि हम लोग ग्रेट थिंकर्स, हम लोग ग्रेट स्कॉलर्स है. सो इफ दैट इंस्टीट्यूशंस couldn't give any solution,
for their society. Forget about your all greatness. एक ऐसी संस्था जो खुद को बहुत महान बता रही है बट अपने आसपास के समाज का समाधान, समस्या का समाधान नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी. बेसिक नीड्स, मनुष्य जीवन की या समग्र प्राणी जगत की जो बेसिक नीड है उसका अगर समाधान नहीं दे सकते, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर आवर लोकेलिटी, इफ वी कांट गिव द सोल्यूशन फॉर इट, then what will be the use of it? ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई विश्वविद्यालय है कि वो बता सके? And the same thing applicable for museums too. So the ICOM 2012 theme museums as the problem solvers. संग्रहालय जो है, बट इसके लिए धरोहर क्या है पहले समझना पड़ेगा. By valuing the heritage, people want to care for it. By valuing heritage, वैल्यू देना है. जैसे माँ बाप बच्चों के लिए उनका कितना महत्व है, बच्चों के बारे में माता पिता के दिल में हमें पता है, इसलिए वो उनको केयर करते हैं ना. एक बच्चा पिता की माता की उंगली पकड़ करके चलना सीखता है तो बच्चे के जैसा वो चलते हैं. वो रेंगता है तब वो उसके साथ रेंगते हैं, है ना. घुटनों के बल वो चलता है तब ये भी घुटनों के बल चलते हैं. पीठ पर बिठा करके उसको जो है दादा दादी माता पिता वो घुमाते हैं. बट आर द चाइल्ड्स रेडी for to doing the same things for the mother and father, for the grandparents? If not, then ask the question to yourself, where is the problem? If you are not happy with yourself, if you are not happy with your family, if you are not happy with your society, then where is the problem? Problem is with us. Because we are not valuing, we are not understanding what the heritage. धरोहर सिर्फ वो मूर्त रूप से कुछ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, it's not like that heritage. Our practices, the best practices जो सदियों से हमें मिली हुई है, वो विरासत, वो धरोहर है जो अच्छाई की सौगात हमें मिली थी, हमने उसकी तरफ अनदेखी कर दी. तब इसकी वजह से जो है केयरिंग, द केयरिंग नेचर स्वभाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति केयर का. बाय केयरिंग द हेरिटेज विल हेल्प पीपल टू एंजॉय इट. हम जब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, सब मिलके आनंद ले सकते हैं. Why can't we nowadays enjoying anything? आज ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से हम कोई भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं? इसका कारण है कि हम एक दूसरे के प्रति, we the peoples, हम सब लोग एक दूसरे का केयर नहीं करते हैं. हम और प्रकृति का केयर नहीं करते तो प्रकृति भी हमारे प्रति वो नहीं रही. सो सर्वाइव द फिटेस्ट नाम का जो ये आया ना, एक सेंटेंस आया, भाई जो फिटेस्ट होता है ना वो सबके लिए सरवाइव करने का, दूसरों की सेवा में खो देना सबसे बड़ा जीवन का आनंद है. ये हमारे ग्रंथों ने हमको सिखाया है. बट जब तक ये नहीं करेंगे केयरिंग, माता पिता का, जैसे बहू अपने सास ससुर के प्रति और एक पति अपने पत्नी के माता पिता के प्रति जब इस तरह का केयर नहीं करेगा, बच्चे माता पिता के प्रति, माता पिता बच्चों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, हम लोग अपने आसपास के परिवारों के प्रति केयरिंग जब तक नहीं करते हैं, खाक में मिल जाए ये सारी जो भी दिख रही है, जो आर्किटेक्चर, जो मूर्तियां खाक में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्रिएशन करेंगे सब मिलकर के, when we all come together, we can create such beautiful things because once it's happened, no? कभी तो ये निर्माण हुआ है ना. सो हम लोग भी जब साथ में मिलेंगे हम लोग भी सुंदरता को निर्माण करेंगे. बट वी हैव नो टाइम फॉर टू क्रिएट. मेरे पास खुद के पास समय नहीं है भाई कि मैं कुछ अच्छा निर्माण करूं, मैं दूसरों को क्या सिखाऊं, ऐसा बोलने वाले लोग. बट ट्राई टू बी गुड. कुछ प्रयास कीजिए. एवरी वीक आई आस्क टू माई सेल्फ, what's new thing I learned in last week, in this week, or what's reading, writing today, how much time I spend with my mother, father, or my brother, or with my child. इतना समय नहीं है बच्चों के पास में कि जब उसके अंकल फोन करते हैं या कोई फैमिली रिलेटिव्स फोन करते हैं, या घर में माँ के पास या पिता के पास इतना समय नहीं है बच्चे को अपने जो भी रिलेटिव्स है उनको फोन कॉल
के साथ में जुड़े रखने का, एटलीस्ट फोन कॉल के साथ, वंस इन वीक। अब फिर हफ्ते में एक बार फोन करना पड़ रहा है, क्यों? समय ही नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे मेरा मेरा एग्जाम चल रहा है, माँ बोल देती है कि नहीं बेटे का पढ़ाई का ये चल रहा है, दादी माँ को कब फोन किए थे पूछे, पता नहीं है। So same thing happened, same results will happen in the future too. Then the new generation will ready hmm, to avoid you. They are not ready to accept you. 60 साल पहले इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। आज हमारे देश में 1,58,000 वृद्धाश्रम हैं। बट 60 साल पहले हमारे देश में एक भी पालना घर भी नहीं था, हाँ, बेबी केयर सेंटर्स नहीं थे। बट नाउ डेज दे आर आल्सो थाउजेंड्स। So recycle. By caring the heritage will help people to enjoy it. From enjoying the heritage, people come athirst to understand it. समझने का प्रयास करेंगे एंजॉय करते करते। So just I want to say one thing. When you want to travel, if you want to go for any tourism, ऐसी जगह पर ले जाएं बच्चों को, चाहे वो आपके घर के पास में भी हो सकता है, आपके बाजू वाला कोई घर भी हो सकता है, मे बी देयर इज एन एनी फैमिली जस्ट बिसाइड ऑफ यू, एनी हाउस जस्ट बिसाइड ऑफ यू, और इन नेक्स्ट कॉलोनी, और इन नेक्स्ट सिटी, where we will learn such things. That's the actual heritage. ऐसी चीजों को सीखे जो वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू, केयरिंग, एंजॉइंग, ये सबको सिखाएं, पॉजिटिवनेस को हमको बढ़ाने के लिए प्रमोट करे। ऐसे जगहों को, ऐसे साइट्स को, ऐसे परिवारों को जोड़ते चलेंगे, देन वन डे विल बिकम, वी से, वसुधैव कुटुंबकम. So millions of people visit the museums, not the archives or archaeology department, but they are bonded with the culture, follow the culture. So use this all in our museums to connect the people's community, society, and universe. So many such things, museums, mass and class, without any boundaries. Could you say इसमें से कौन कौन से जाति का है, धर्म का है, कौन से देश का है, ऐसा बता सकते हैं? नो, इट्स बियॉन्ड दैट ऑल दिस थिंग्स. सो कल्चर इज समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल. संस्कृति वो होती है जो समाज को जोड़ती है, विश्व को जोड़ने की ताकत रखती है. सो दिस इज व्हाट आवर कल्चर, वसुधैव कुटुंबकम. सबसे परे जाकर के हम इसको ये करते हैं. ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जनजातीय जातीय साहित्य महोत्सव, फोटोग्राफी, मीडिया महोत्सव, ये क्या है भाई? दीज ऑल ओकेजन्स आर फॉर कनेक्टिंग द पीपल्स, connecting the peoples. So rhythm, goddesses, games and music. Today I visited a book festival in Pune. Wonderfully, I visited some places where I tried to learn some new things, new games also. Purchased a few books about music and different subjects. So museums for social harmony. Then museums, see, museums of Pune. Where he's saying the unspeakable in museums. कुछ ऐसी बात जो हमारे दिल में है, जो हम कहने के लिए उन्हें एक मंच देते. We offer a stage for such peoples, those who want to say something. ऐसा. So ऐसी अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए, अपने अंदर की जो बुराई है उसको हम निकाल देने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करेंगे. So museums for equality, diversity and inclusion. So thanks a lot to all of you. Please think about these new challenges. This हम लोग अंदर से पर्सनली, इंडिविजुअली ब्रेक डाउन हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत पढ़ रहे. We learn so many things, educated, so many degrees, PhD holders, कलेक्टर, IAS, IPS बन रहे, but because of frustration, suicide हो रहा है. Suicide हो रहा है. In last 1 year only 1,700 youth suicided. Not because of any money problem or anything like that. Millions and billions rupees are there, but till then, because of the frustration, suicide. Then parivars, families break. So सभी bonds टूट रहे. Relatives, पता नहीं है, बच्चे को पता नहीं है उसका गांव में कौन है, अपना आसपास, माँ पिता रेडी नहीं है उसको सबके साथ बात कर देने के लिए, और वो खुद भी रेडी नहीं है दूसरों के साथ बात करने के लिए. पैसा कमाने के चक्कर में, इन दिस साइकिल ऑफ अर्निंग एंड मनी एंड मनी एंड मनी, फिजिकल की रेस में इतने तेजी से दौड़ रहे हैं
ये सब ये जो एक्चुअल हैप्पीनेस जिसमें है, जिन रिश्तों में, नातों में, जो एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, हम उसको भूलते जा रहे हैं. So please we try to collect such moments of happiness. Then, like this, so many events are there, like International Museum Day. Just remember, our festivals, fairs, and all these things are for to sharing this happiness with all. ये सभी अपनी खुशियों को सबके साथ बांटने के लिए होता है. सो इफ म्यूजियम्स आर नॉट रेडी इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड for to accept new challenges and new inspirations, again please forget about the museums means not only जहाँ पर बहुत ऐसी चीजों को collect, so many antiquities are collected over there and kept well in the showcases or like that. Forget it, forget it. Now new challenges, open air museums, virtual museums, so many things are there. You can use any type of space, any type of space, if you are capable for to design how to exhibit and which things. Okay, so thanks a lot to all of you. If any mistakes, please forgive me for it. I am also a very small student of this all. मैं भी सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ. I am till trying to learn a lot. So with the blessings of all of you, this journey will continue in the future too. So again, just I want to mention about one thing: how to submit the this notes. So please remember 3 PDF files. First is for your all session notes. Second is for your assignments. Then third one is for your project report. Okay, 3 different PDF files. If you want to make a single PDF file, please do it accordingly. So all session notes first, then the second part of that same PDF file is for your assignment, and third part is field visit report. Visit any museum in your locality and try to make a report. Then please remember, on the first page you should need to mention your name, your WhatsApp number, your email ID, and then at last your address location. Okay, so now humble request to all of you that please on your video, just a minute, I will open it. So yeah, okay, so now please open your video and on your camera for to take a group photo. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जैसे भी जिस स्थिति में हो, बस 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम सभी जो है एक ग्रुप फोटो सबका लें, so that we can share in our group too. So very humbly thankful to all of you. If Usha ji or Atharva ji is there, please on your video too. So Manek ji and Harini ji, Naman ji, Shahid ji, Pratishtha ji, अश्विनी कुमार जी, जो नहीं दिख रहे बस उनका नाम मैं ले रहा हूँ. सो इफ पॉसिबल, ओके, सो थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लाइए, उसके लिए तो पैसे नहीं लगेंगे. ओके, थैंक यू. यू कैन ऑल्सो टेक अ ग्रुप फोटो. आप भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू कैन शेयर इट विथ मी. सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. और इस तरह से हम लोग आगे भी मिलकर के सीखने का प्रयास करते रहेंगे. एज आई मेंशन दैट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट और स्कॉलर एनीथिंग लाइक दैट, टिल आई एम अ स्टूडेंट, एंड